तो मैं उसको देखता था स्कूल के अंदर, मुझे दिखती थी, और मैं दूर हो जाता था, वो दूर हो जाती थी, एंड we would just in the night talk and say this to each other, and I was just like, यार ये क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ लग रहा है कि ना सही नहीं है. For some reason she didn't want to be seen with me in public. Now she would tell me it's because her parents shouldn't find out. बट जब उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, उसके अगले लड़के तो हाथ पकड़ के चल रही थी यार. मैं कहा ये तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Isn't that the script of Half Girlfriend? Welcome to another episode of किस्से with कोपल, जहाँ हम सुनते हैं किस्से ख्वाबों के, जज्बातों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के. Well, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं होते हो, बट आप उनके बारे में इतना सुनते हो दूसरों से, और इतनी तारीफ सुनते हो, इतनी अच्छी बातें सुनते हो कि आपको एट वन पॉइंट लगता है कि यार इनसे नहीं मिले तो फिर किससे मिले, सो टुडेज गेस्ट इज बेसिकली दैट पर्सन फॉर मी, जिनके बारे में मैंने इतना कुछ इतने सारे लोगों से अच्छा सुना है that I was like, I have to meet him in person, listen to all his stories, which is why this person is here today. Please welcome Nikhil Taneja. थैंक यू सो मच कोपल. आप इसके बाद नो प्रेशर भी बोल देती तो मुझे लगता कि ठीक है. मतलब थैंक यू, सच अ काइंड एंड जेनरस इंट्रोडक्शन. मैंने भी आपके बारे में एज आई टोल्ड यू द अदर डे बहुत ही प्यारी चीज़ें सुनी हैं. आई हैव सीन टेपर टेल ग्रो इनटू सच अ फेनोमिनल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. मैं आपकी काफ़ी बातें मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी हमने बातें की हुई हैं, एंड आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. बट मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा प्रेशर वैसे ही आया पड़ा है, बिकॉज इसके बाकी जितने भी गेस्ट हैं दे आर ऑल दीज इनक्रेडिबल क्रिएटर्स. अभी सुमुखी का एपिसोड हुआ, मलिका मैंने देखा है, रोशन सर वाज हियर. मतलब हाउ डू आई इवन लिव अप टू देयर स्टोरीज, बट I'll do my best. Listen, I'm sure you will be amazing. Again, no pressure. But honestly, I think in the 3 conversations we've had, I've told you this, that admiration is 100% mutual. Love everything that you have created. There's Yuva, and there's all the other stuff. With the writing, with the production, with Be a Man Yaar. Thank you. Amazing conversations, and thank you for bringing all those conversations to the forefront. So much. Thank you. Means a lot. But today's this thing is going to be slightly chill because there are objects in this box. Sure. And each object is going to trigger some memory. I know that you have like a segment in Be a Man Yaar also that is like unboxing. So you're familiar with the concept. So I'm going to open the box. Sure. Excited about this. Okay. Wow. There are a lot of things. Let me see what I want to. There's birthday candles. There's like a star. There's an inchy tape. There's a mirror. यार अभी हार्ट की बात हुई तो मैं हार्ट से शुरू करता हूँ, क्योंकि so I've been with my wife now for 17-18 years. So it wasn't child marriage, that I can promise you. हम लोग कॉलेज में मिले थे. She was my junior. I was in an engineering college जहाँ पर मतलब 4000 लड़के होते हैं और I think about 100 लड़कियाँ होती हैं. उसमें से मैंने कहीं ना कहीं I found a partner there. And it's so nice because हम जो पहली मेरी उस फोटो है, my wife's name is Daisy. The first photo I have of her when वो 18 साल की थी, मैं 20 साल का था, और मैंने उनकी एक फ़ोटो खींची थी. उस टाइम मेरा Nokia 6600 करके फ़ोन आता था, वो था. और and she was holding a big heart, so the moment I see this heart, it was a pillow, heart kind of shaped pillow. And our love story was मतलब मैं अगर वो बोलने लग जाऊँ तो 1.5 घंटा तो वहीं निकल जाएगा. But it was a very filmy love story because मैं डेजी से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि मुझे उसकी फ्रेंड पे क्रश था. तो मैं उसके पास मैंने उसको बोला था कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे ना पूछना है कि उससे कैसे बात करूँ. अब एंड दिस इज एन अनबिलीवेबल थिंग कि हुआ ये कि डेजी के पास एयरटेल था और मेरे पास भी एयरटेल था, और एयरटेल टू एयरटेल ना उस टाइम पर फ्री कॉलिंग थी. और जिस लड़की को मैं लाइक करता था उसके पास BSNL था, और एयरटेल टू BSNL 2.5 रुपये पर मिनट आता था. तो मैंने डेजी से बात करनी शुरू की उसके बारे में, पर क्योंकि फ्री होती थी बातें तो मतलब बातें चलती रहती थी. और जब भी पहली बार मैंने जब उससे बात की, जिस लड़की को मैं लाइक करता था, मैं ऐसे टाइमर लेकर खड़ा हुआ था कि यार ये तो अभी ख़त्म कब होगा, क्योंकि मतलब पैसे इतने होते नहीं कॉलेज के अंदर, कहाँ होते आगे इतने पैसे. तो मैं तो टेंशन में था कि ज़्यादा बात होगी तो फिर
So because of that, I never actually got to even like जो talking stage आजकल चलती है वहाँ तक ही पहुँचा नहीं था मैं उस लड़की के साथ and Daisy के साथ started talking and I would say that she was my friend for the first 6 months. मेरे साथ 4 crushes हुए जिसके बाद मैं Daisy से बातें की है और एंड एक के साथ थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया था ऑलमोस्ट वो प्लेस कि जहाँ पे मुझे मतलब ये हो गया था कि ना मेरा टाइम मैं क्रश को दूँ या फिर डेजी को दूँ एंड आई फाइनली लाइक एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी मुझे ना सपने में एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ रहा था कि यार क्या लाइफ है आई हैव दिस गर्ल दैट आई रियली लाइक बट शी इज़ समवेयर आस्किंग मी टू चूज़ कि जो ना तुम्हें तुम कहते हो मुझे लाइक करते हो आधा टाइम तो तुम डेजी से बातें करते रहते हो आई वाज लाइक वो मेरी फ्रेंड है मैं क्यों छोड़ूं उससे बात करना तो मैं सोने चला गया इतना फ्रस्ट्रेट होके कॉलेज के अंदर अपने बाकी पीरियड्स बंक करके मैं सपने में आया दैट डेजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एनी मोर नॉट लाइक शी डाइड बट इट्स लाइक शी इज जस्ट not देयर एंड आई जस्ट वोक अप फीलिंग सो लोनली and I gave her a call और मैंने and I had seen like 3 missed calls from her. I think we used to talk a lot at that time. मैंने कॉल किया उसको मैंने कहा कि मैं बोलते बोलते चला गया व्हाट हैपन आई ओके 3 घंटे हो गए तुमने मुझे मैसेज तक नहीं किया मैंने कहा हाँ यार ये मुझे एक्चुअली सपना आया सपने में मुझे ऐसा लगा कि तुम हो नहीं और फिर मुझे ना बहुत बुरा लगा आई वाज फीलिंग वेरी लोनली एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब द अदर गर्ल इज आस्क्ड मी टू चूज बिटवीन यू एंड हर बट अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा बट तुम मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मुझे I don't know how I live, because I think like you are very dear to me. I think, I really like you, and maybe I even love you. तो मैं बोलते बोलते बोल गया and then there was a big silence and it was like a flash happened on the phone call where I was like, yeah, I think I love you. And she's also listening, she's not responding at all and I'm like, oh shit, क्या बोल दिया? And then I was like, हाँ मुझे लगता है सच में है मुझे लगता है I don't want to be with anyone else. I think I only want to be with you now. So yeah, do you think you also want to be with me? And then she didn't say something for like a good 1 minute. And my heart was in my mouth. I was like, this heart was like, कैसे बोलूँ मैं? And at the end of it, she says, so who should we tell first? And I was like, so is it a yes? She's like, yeah. I was like, okay then. So that was in 2006 when and हमारा relationship तब से we married in 2015. 9 साल हमने dating की and now it's been 8 years of marriage. And the best part about us is कि डेजी जब मैं डेजी को मिला था वो 18 साल की थी मैं 20 साल का था मैं भी 37 का हो चुका हूँ डेजी अभी भी 18 साल की so she doesn't look older she doesn't behave older so that's our relationship. So that is I think the best love story I've heard. What a unique beautiful sweet story. Wow. ये तो अभी बट मतलब मेरे को हार्ट से तो इतनी स्टोरीज है ना मैं क्या बोलूँ मतलब अभी एक बोल दी मैं देयर इज आई एम अ वेरी बिग रोमांटिक मतलब मैं DDLJ ऑब्वियसली मेरी जनरेशन में तो आई थिंक DDLJ वाज द थिंग मुझे जिंदगी में सिमरन चाहिए थी मुझे पता मुझे राज एग्जैक्टली यही चाहिए लाइफ के अंदर और क्या ही है लाइफ ढूंढो सिमरन को एंड तो मैं तो मेरी कोशिश ही यही थी इनफैक्ट मैं इतना फिल्मी हूँ कि because of the DDLJ love and obsession that I had, I ended up working in Yash Raj Films. I ended up, and not because, let me tell you, not because I used to, this is such a weird thing to say on camera, but DDLJ में ना एक सीन है जहाँ अमरीश पुरी जो है ना UK से इंडिया रिटर्न करते हैं कहते हैं मेरा देश मेरी मिट्टी एंड वाह एंड देन देयर इज सरसों के खेत आते हैं लोग डांस कर रहे हैं पंजाबी में एंड मैं आई ग्रू अप आउटसाइड ऑफ इंडिया आई ग्रू अप इन बहरीन तो मेरे लिए जो ना तो वाइल ऑफ कोर्स राज एंड सिमरन वाज अ होल थिंग कि हाँ यार मुझे ऐसी लव स्टोरी चाहिए बट मुझे इंडिया आने की इंस्पिरेशन अमरीश पुरी से मिली है मैं अमरीश पुरी को देखता था मैं कहता यार बात तो है कुछ मेरा देश मेरी मिट्टी कुछ होता है ऐसा मैं लगता है कि मुझे करना है so I've actually ended up in India and in DDLJ because of Amrish Puri in DDLJ and I've told this story to Aditya Chopra who was my boss obviously at some point and he did not react to it he just heard me and just like I just embarrassed myself who says so actually sir मैं ना DDLJ देख के इंस्पायर्ड होके यहाँ पर आया oh very nice यार अमरीश पुरी ने बोला था मेरा देश मेरी मिट्टी so but yeah like love stories and I've always wanted I hope someday I get to make one I've really wanted to always make a rom-com someday in life and
yeah, and for the longest time, I mean बहुत stories है यार, मैं इसी पे चलता रहूँगा, otherwise चलेगा मुझे चलेगा नहीं तो मेरा actually before my कुछ बहुत stories हैं, but एक और मैं छोटी सी हाँ, बता, छोटी मतलब, so a long part of my life has been, पहली बार जब मेरा दिल टूटा हाँ yeah. was someone who's now one of my dearest friends actually, and my best friend actually in life, and we were kids, we were in school, और हम लोगों and हमारी वही फ़ोन पे सारी हुई हैं, आई थिंक सारे जन आप फ़ोन पे रखती थी, वही बातें निकलनी थी, बिकॉज फ़ोन होते थे रात को, लेट नाइट कंबल के अंदर बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, समर वेकेशंस थी, एंड वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस, आई मीन दिस वाज द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, एंड उसको जाना था इंडिया से बाहर, मैं इंडिया आ रहा था, तो यू नो रिलेशनशिप, शी टुक द मैच्योर डिसीजन एंड सेड कि देखो मुझे नहीं लगता कि एज वी आर यू नो लॉन्ग डिस्टेंस हो पाएगा, बहुत दूर जा रही हूँ, तुम बहुत दूर जा रहे हो, लेट्स जस्ट यू नो एंड इट, एंड दैट हार्ट ब्रेक फॉर मी, आई जस्ट कुडंट फैथम, आई वाज लाइक डिस्टेंस की वजह से कौन, मतलब व्हाट, यू नो, बिकॉज मेरे दिमाग में ना आस्किंग आउट अ गर्ल एट दैट टाइम व्हेन आई वाज 16 15 17, मतलब आई लव यू मेंट एक दिन तुमसे शादी करने वाला, मेरे दिमाग में तो मैं उदय चोपड़ा था ना धूमगा, मैं वही था, लड़की को देखता हूँ, आई डोंट जस्ट सी, या आई डोंट जस्ट सी दैट यू नो रिलेशनशिप और लाइक रोमांस एंड यू नो डेट्स एंड व्हाटएवर, आई सी कि यार इसको मैं, हाँ मैं उसको डाल रहा हूँ वरमाला, एंड वो मुझे वरमाला डाल रही है, and when it didn't happen, it took me about 2.5 years of my life after that, just you know, when the only thing I could think of was, you know, how did this happen, you know, how could we have broken up, it makes no sense to me कि मैं तो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था, मैं तो बहुत प्यार दिया है, ये कैसे हो सकता है यार, कोई ऐसे मतलब एक दिन बोल देता है कि नहीं है करना प्यार, ये कैसे हो जाता है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था, आई जस्ट कुडंट फैथम दैट, you know, you fall in love, but how do you fall out of it, like suddenly कैसे होता है ये, and I feel like I think a lot of boys grapple with this, तो मैंने बहुत उसके बाद 2.5 साल के बाद you know somehow or the other I made peace with it, and I made peace with it also is a really stupid story, but I watched a film called Hitch, जिसमें Will Smith was the perfect boyfriend in his past, तो वो he plays a teenager in the past कि उसको भी perfect boyfriend था, लड़की छोड़ गई, and उसने लड़की का जो ना there's a moment like where he's just, the girl is with somebody else and he's looking at her and he's like, what did I do wrong, and the girl responds and said, you are doing it right now, and I'm like क्या है, और मेरे जो ना एक उस टाइम में MSN मैसेंजर हुआ करता था, फॉर आई थिंक 2 साल तक मेरा ना MSN मैसेंजर पे स्टेटस था, समटाइम्स डूइंग एवरीथिंग राइट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, अभी भी मुझे याद है, बिकॉज मुझे लगता था कि यार सब सही किया तो कैसे क्यों, you know, it's only when I grew up obviously much later, because I've you know, I obviously also now the person we're speaking about is actually one of my closest friends, and one of possibly my bestest friend in life, तो मैं उसका क्लोजर भी हुआ है, हमने बाद में जाके बड़े होकर मैच्योर तरीके से बात भी की थी कि हुआ क्या था, and I think a lot of it you know, full marks to her where she realized it was too intense too soon or whatever it is, बट फॉर मेरे लिए ना जो मुझे बाद में समझ आया ना कि मैंने ज़िंदगी में ना एक्चुअली उससे पहले ना एक्चुअल फेलियर नहीं देखा था, कि ना मैं ना मार्क्स वार्क्स भी ठीक लाता था, यू नो, मैं आई वॉज ऑलवेज लाइक अ गुड सन, गुड ब्रदर, यू नो, गुड बॉयफ्रेंड, सब अच्छा था, तो मैंने कभी, एंड एवरी टाइम आई वुड गिव, आई वुड रिसीव ऑल्सो, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेयर यू नो आई रियली फेल्ड, तो मुझे इट वॉज नॉट सो मच द हार्ट ब्रेक विच ऑब्वियसली वॉज अ वेरी बिग डील, बट इट वॉज द फैक्ट कि मेरा मतलब मैं कैसे फेल हो गया इसमें, मैं ना ये कर कैसे नहीं पाया, सो इट वॉज एक्चुअली टाइड अ लॉट टू माई ओन आई डोंट नो ईगो, इट वॉज टाइड टू माई इनसिक्योरिटी कि मेरी जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता, या पता नहीं जब भी पहली बार होता है, किसी के लिए एग्जाम में होता है, किसी के लिए किसी और चीज़ में होता है, तो बहुत धक्का लगता है, तो वो धक्का मुझे लगता है 2.5 साल तक मैं ना उसी को लेकर घूम रहा था कि मैं फेल कैसे हो गया यार, मैंने सब ठीक किया था, and it is true what my teenage self used to write on, you know, messenger, sometimes, you know, doing everything right doesn't mean that everything will go right, you know, sometimes things go wrong and it's okay, you know, and those are the things
जो हमको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं लाइफ के अंदर, और एंड यू ग्रो अप अ लिटिल बिट. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ माय कमिंग ऑफ एज, आई थिंक दैट वाज अ कमिंग ऑफ एज मोमेंट फॉर मी. इट मेड मी रियलाइज कि यार हाँ यार, दुनिया में ऐसी चीज़ भी होंगी, दिल भी टूटेगा, फेल भी होगे, और बट इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फाउंड few years later the person who's now my wife, and I'm so happy. And my wife and her are like really close friends now, and they get together, bitch about me half the time. So that's that's just the circle of life, I think. But it's so amazing, know that when most people talk about teenage love or young love, it's always like such a frivolous thing. But it plays such a pivotal role in forming you as a person. Correct. That first heartbreak, that first no, that first being able to confess your feelings. It's so important. Like even when I look back at like the first boy I had a crush on, I'll always joke about it, Right. It's never like, but I know what I went through at that time. I wrote diaries about him, and what I felt. So it mattered to me so much as like a 12-13-year-old, that feeling. But मैं बताऊँ कोपल, मुझे हमेशा से ना इस बात पे काफ़ी अजीब लगा जब लोग ना, people have this tendency of looking down on teenage obsessions, right? हाँ. कि यार आप टीनेजर हो, इतना क्या, ये निब्बा निब्बी बोलते हैं ना, अब ये क्या है, क्यों तुम इतने पीछे पड़े रहते हो. बट द फैक्ट इज, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर आई रियलाइज कि जब आप टीनेजर होते हो, जब आप यंग होते हो, एक्चुअली जो आप फील कर रहे होते हो, इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर हैविंग दोस फीलिंग्स. उसके बाद तो बहुत बड़ी फीलिंग्स आती हैं, आपका दिल उसका मतलब फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ टूटता है, आप ना फेल होते हो, समटाइम्स द फर्स्ट टाइम यू फॉल इन लव, उसके बाद आप होपफुली यू फॉल इन लव अगेन. पहली जब डेट होती है तो पहली, उसके बाद और होती है, बट जब पहली बार हो रही होती है, योर हार्ट डज नॉट इवन नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट, बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब आप फील कर रहे हो तो वो इतना एम्पलीफाइड होता है. तो मैं तो काफ़ी अभी एम्पथाइज करता हूँ यंग लोगों से, जब कोई एक्चुअली बोलता है कि यंग पर्सन सेज दैट it's one of those love actually moments, like an 8-year-old boy telling his dad, I think I'm in love. And he's like, you're in love. I thought it was something serious. And he's like, what could be more serious than that? But it is, right? When you are young, and ये चीज़ें बहुत मुझे लगता है काफ़ी important होती है. In fact, I mean, but at the same time, I would say that there are frivolous things as well. I don't like when you're saying my first, oh God, I don't know why I'm saying this. My first half relationship, I don't know what it was, was so random. It was so random. It was where I had, मैंने बोल दिया था लड़की को कि I love her, और वो भी मुझे बोलती थी I love you, बट वो ये भी कहती थी किसी को बोलना मत और किसी को बताना मत. तो मैं उसको देखता था स्कूल के अंदर, वो मुझे देखती थी, और हम, मैं दूर हो जाता था, वो दूर हो जाती थी. And we would just in the night talk and say this to each other, and I was just like, यार ये क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ लग रहा है कि ना सही नहीं है. For some reason she didn't want to be seen with me in public. Now she would tell me it's because her parents shouldn't find out. बट जब उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, उसके बाद अगले लड़के तो हाथ पकड़े चल रही थी यार. मैं कहा ये तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Isn't that the script of Half Girlfriend? I am telling you. Chetan Bhagat has tapped into something very real there, but although I mean, I hope that I'm not very inspired by what happens with him. I also think for me, like it's such a stupid story, but मैं इसी पे पकड़, यही रहेगा मेरा. मैं आगे पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं ना पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तो उस लड़की के लिए so it was actually what people say love at first sight. वो हुआ था. I was in 9th standard, 14 years old. डिबेट, हिंदी डिबेट क्लास थी, और आई वाज अ गुड टॉकर स्पीकर. तो मैं अपने स्कूल के अंदर डिबेट मैं जीता था. तो हिंदी की, एंड हम लोग भारत में थे, सो नॉट मेनी, व्हाइल देयर वर इनफ पीपल वो हिंदी बोलते थे, बट हिंदी अच्छा इतना नहीं बोल पाते थे लोग, और या फिर इतना मतलब डिबेट और लाइफ के अंदर इतना नहीं हो पाता था. तो क्लास हुई, मैंने अपना आई मेड माई आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स ब्यूटीफुल, एंड देन suddenly out of nowhere this 1 year younger girl says, I also want to speak, and typically I was like, पता नहीं कौन, and I was it wasn't that I was waiting to be unimpressed, but I was like कौन होगा. And then she spoke, and the first thing I noticed were I mean actually I noticed that later, but when she spoke with such a honesty, and I was like ये कौन है यार, हिंदी भी अच्छी बोल रही है और इतनी honest भी है,
और मैंने इतना केयरफुली नहीं देखा उसको, बट मैंने कहा ठीक है कोई इंटरेस्टिंग, एंड देन आई केम आउट फ्रॉम देयर एंड मैं मुझे याद है मैं सीढ़ी पे जा रहा था, वो यहाँ से बाहर निकल रही थी और मैंने ऐसे उसको नीचे पीछे देखा एंड देन आई नोटिस हर आईज एंड शी हैड लाइट आईज एंड आई वाज गॉन. I looked at her, she looked at me और हो गई मुश्किल. वही हुआ. And उसके बाद I was like ये है मेरी destiny जो उस गाने में होता है. मैं तो पढ़ गया. I was the first time in my life I've had that audacity to tell that girl immediately कि मुझे आपका नंबर चाहिए. You know, and she gave it also. Like, I mean, I didn't say it in this way. I think I was far more cuter, but she gave it, and then, you know, and then I think 2 days later we met again in some Hindi class. She's like, तूने नंबर लेके तूने मैसेज तो नहीं किया? And I was also like, हाँ मैंने मैसेज नहीं किया. And she's like, क्यों नहीं किया? मैंने कहा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अलाउड है. तो तूने नंबर क्यों लिया? I was like, it's a good question. So that night I did message because I got like consent मिल गया था. मैंने मैसेज किया कि हाँ you asked me to message, so I'm messaging. So it was a very cute thing, and it went on for some time. As I said, कि जहाँ पर I don't know if I should be. I think I was really stupidly innocent at that time, and I'll tell you why by another story. It's such a stupid story. God, she one day called me and said that निखिल मुझे ना एक सपना आया. मैंने क्या सपना था? And she says कि सपने में ना you kissed me, and I was like, oh, and she's like yeah, and then I was like, पर ये तो पाप है. And she's like, what? I was like, and I'm 14 at this time, okay, please like do not judge me people. I was a very innocent 14-year-old. आजकल के लोग तो आजकल के Gen Z देखेंगे वो तो जूता उठा के वीडियो को मारेंगे. And but so cute. But I literally, this was the response, and she says what, and I said yeah, like isn't that betraying our parents? And she's like what, you know, and I was like yeah, I think like we should be more responsible. And she's like what, and I was like yeah, and I think that's where after which she just, I think after a point, I think उसने 1-2 दिन और मेरे से बात की, उसके बाद उसने कहा ये तो पागल लड़का है, इसके क्या काम करूँगी. So I get it. It's not like I don't get why she broke up with me. मैं भी had a broken up. You're like the Aishwarya Rai from हम दिल दे चुके सनम. Yeah, and the funny thing Kopal is कि मुझे after still, you know, again breakup, I don't even know if you were dating for us to break up, but जो भी हुआ जब वो टूटा, मैं तो obviously दिल टूटा हुआ था थोड़ा बहुत. फिर मुझे उसकी बहन ने एक दिन बोला कि तुम इससे इतना प्यार क्यों करते थे, you know, and we were, I started seeing her sister also. यार उसकी एक तो बहुत मुझे अच्छी लगती थी और उसकी आंखें, तो कॉन्टैक्ट लेंस मैं पहन लूंगी तो मुझे भी प्यार करने लग जाओगे. मैं को कॉन्टैक्ट लेंस पहनती है. This is after like 6 to 8 months of us. I was like, she was wearing contact lenses. She's like, हाँ तुम्हें पता नहीं था? मैंने कहा नहीं. And I was like, ये क्या झूठ हुआ मेरे साथ. Such idiotic stories, and I'm telling you my stories are so stupid. I don't know what, मेरे को क्या एक morality मेरे अंदर घुसी पड़ी थी as a 14-15-year-old. The first girl who actually asked me out on an email. Okay, and I think the only girl who's asked me out, I think, because बाकी को मैंने बोला है, she's this really pretty, really sweet girl. Who was बहुत ही प्यारी थी यार, बहुत sweet थी, and such a nice kind person actually. And very, and you know, for a 14-year-old, 15-year-old, very stunning also. And she had emailed me saying that, you know, I really like you, and I think we should date. So it was a very forward, direct thing. And I wrote back, and I remember I was at a friend's place. Oh God, मैं ना उस टाइम मेरी ईमेल, और मैं पता नहीं ईमेल्स अभी भी ईमेल आया था उस टाइम पर, इनफैक्ट अभी डायल अप आया था. So I was at a friend's place, and I looked at the email, and I looked at my friend was doing something, and I got a little क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ मैं. And then I said कि can you give me like 5 minutes, मुझे अकेला टाइम चाहिए. So he went out of the room, उसी के घर पे, वो घर से बाहर गया, तो मैं लिखना शुरू किया. And I wrote Kopal an essay on how as teenagers we should keep the trust of our parents. Our parents don't send us to school to date each other. Our parents send us to school to study. I think if we date each other, we are breaking the contract between parents and children. मैंने उसको ऐसे कुछ ऐसे लिखकर भेजा,
I don't even remember her response. I don't think she ever responded to it. I think she must have just been like delete memories and delete. Forget just emails and delete. And that is the kind of person I was for some weird reason. And I'll tell you why I went left. I told my friend to go out because when he came back, he's like, "Why did you have to go out?" And I was like, "मैं दिखाता हूँ मैंने क्या आज." Because I was like very proud of myself for taking this stance. Yeah. So I called him and I said, "ये देख." उसे पढ़ा पूरा पढ़ के उसने जो मुझे I think उसने धक्का दिया इतनी जोर से मैं गिरा. He's like, तेरा दिमाग खराब है, इतनी सुंदर लड़की है, तू पागल है क्या? I was like, तुम नहीं समझोगे. You know, this is तुम नहीं हो, तुम ना तो amoral इंसान हो, तुमको नहीं समझ आएगा. He's like, तुम गधे इंसान हो. Which now when I look back, I was like, he was right. He was. But like growing up, were your parents like strict? No, यार, it wasn't like they were strict. I think. Or was it out of like? I just want to understand because like अलग जब आपके पेरेंट्स अच्छे होते हैं ना, लगता है जब पेरेंट्स खराब होते हैं तो अलग फाइट होता है, जब पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो अलग फाइट होता है. तो लगता है कि यार पेरेंट्स, माय मदर तो in particular I'm still so deeply like bonded with her and I so deeply love and respect her. तो मेरा यही था कि यार वो मुझे इतने प्यार, she is really raised me and my brother with so much love and so much effort and you know we were not very well off when we were growing up. Yeah. तो उस टाइम पर फॉर हर हमेशा जो ना वो हमको प्रायोरिटाइज करती हैं, अपनी चीज़ों को छोड़कर, अपनी हैप्पीनेस को छोड़कर, अपने लिए नई चीज़ें लेने की जगह हमारे लिए नई चीज़ें आती थी. आई वुड सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स अबाउट हर एंड आई वुड जस्ट हैव, मतलब बहरीन के अंदर 40 to 43 डिग्रीज ऑफ वेदर के अंदर ना हमको हर रोज़ हमारी माँ दोपहर को when we were in second or fifth or sixth standard or something, रोज़ हमको जो ना गर्म धूप के अंदर ना कभी कराटे क्लास, कभी स्विमिंग क्लास, कभी टेनिस क्लास, कि हम अच्छे इंसान बन जाए. और हम इतने बेकार स्पोर्ट्स पीपल, एक चीज़ हम इस नहीं कर पाए. मैं और मेरा भाई टेनिस में फेल, कराटे में फेल, स्विमिंग चलो मैंने सीख ली थैंकफुली, बट हर चीज़ उन्होंने कराई है ना. शी वुड ऑल्सो एंड शी नॉट गिव अप. शी लाइक, आई विल फाइंड यू वन थिंग यू आर गुड एट, बट आई विल टेक यू एवरीवेयर. एंड आई वुड ऑलवेज लुक एट दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल दीज एफर्ट्स दैट शी वाज पुटिंग फॉर अस. तो मुझे बस यही था कि यार मैं ना उनका दिल नहीं दुखाना चाहता. तो कहीं ना कहीं इट केम फ्रॉम देयर. बट आई डोंट, मतलब एक ज़माने में मुझे पहले पता था वो कूल हैं, तो मैं तो इनफैक्ट आई टेल यू व्हेन आई वाज इन कॉलेज सेकेंड ईयर के बाद मैं जब वापस गया तो माई मदर एक्चुअली सैट मी डाउन एंड शी इज़ लाइक, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है ना? मैंने कहा हाँ. तो कहते गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते? आई वाज लाइक, अलाउड है क्या? मतलब आई डिडंट इवन नो कि इतनी कूल है मेरी माँ. And this is the kind of person I am. If I have contact lenses today, it was because during that conversation, she's like, first of all, तो तुम चश्मा हटाओ. Contact lens आ गए, मैं तो contact lens दिलाती हूँ. तो she got me contact lenses. Then I used to have a hairstyle जहाँ पर मेरे बाल ऐसे थे. And then she's like कि तुमको, you know, I mean, I don't know if she used this word, but she said, चुमू जैसे मत दिखो. You know, मैं तुम्हें haircut लेकर जाती हूँ. So she found like, she called friends and she's like, cool haircut कौन करता है लड़कों के लिए? So what hairstyle I have today is the hairstyle my mother got me in 2005-06, and it's the same hairstyle. If she would have, so she was the one who said कि look like, you know, तुम बड़े हो गए हो, तो थोड़ा जो ना ढंग से दिखा करो और जाके ना कोई मतलब get a girlfriend or something, live your life. And that is the year where I got Daisy, because I think मुझे मिल गया था approval. माँ का आशीर्वाद मिल गया. हाँ, तो मिल गया था कि जो ना अभी तुम क्यों नहीं करते. So अब वही ना, when I look back, I'm like पहले वो पता होता तो मैं ये सब you know बोल देता वो कहती किस है, like हाँ great idea, you know, या फिर let's date. I was like let's do it. नहीं किया मैंने. So I have really like I have such stupid memories from. Yeah. I think we've done like half the episode on love now. It is, right? Yeah. चलो अभी half कर दिया तो I'll tell you one last story because it's a really अभी embarrass हो ही रहे हैं तो फिर एक और बताता हूँ. So जब मेरी so this story is about Hrithik Roshan. Okay. And it's about love. And Hrithik Roshan also was love for me. मैंने देखा था कहो ना प्यार है, मैं अगेन 14-15 साल का था. ये सारी 14-15 साल की स्टोरीज हैं. तो मैं उस टाइम देखा था एंड आई वाज लाइक कौन है, क्या हो रहा है, कुछ चीज़ इनसेन, राइट. एंड वो अपने भाई को ऐसे करता है. मैं कहा मुझे भी ऐसा भाई चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसा. मैं बड़ा भाई था, मैं कहा मेरे को भी कोई ऐसा करे, मैं अपने भाई को कर रहा हूँ हट दे. बट मुझे कोई कुछ नहीं करता था. So anyway, I used to be like, I wish I had an elder brother like him or whatever. I was obsessed with him, right? And the girl that who was my girlfriend at that time, जिसका एक हुआ था,
she was also obsessed with him. So it was a common love for us. हम लोग ऋतिक रोशन पिक्चर देखते थे ऐसे यार क्या है यार. So she was in love with him, I was in love with him. Very different kind of love. मेरा थोड़ा brotherly love था उसका, थोड़ा otherly love I suppose. You know, तो but so Coca-Cola at that time got these Hrithik Roshan cards. And पहले उन्होंने ना निकाले थे कि he had just signed on Coke and they made these Hrithik Roshan trump cards and they were limited edition. Okay, हम लोग भारत में रहते थे and my girlfriend was just like at that time कि यार ये ना I wish I had this and I was like yeah. तो मैं समर वेकेशन के लिए इंडिया आया और मैं अपने नाना जी के साथ मैंने बोला कि मुझे एक ट्रम्प कार्ड चाहिए. हम लोग पूरे आई यूज्ड टू लिव इन करनाल, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन करनाल इन हरियाणा. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है देखते हैं. तो मेरे नाना जी मुझे अपनी गाड़ी के अंदर ना करनाल की हर दुकान पर लेकर गए हैं कि सब पूछने के लिए कि ऋतिक रोशन ट्रम्प कार्ड्स हैं और करनाल में नहीं थे कहीं. सो देन आई वाज लाइक आई हैव नॉट गोना गिव अप. सो देन आई वाज लाइक यहाँ पर कोका कोला के आसपास कोई फैक्ट्री है क्या? And they were like yeah है. So I called the factory. I was like is there and found the number. I was like is do you have Hrithik Roshan trump card? They said हाँ शायद 2-3 कहीं उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए. तो वो मतलब आधा घंटा दूर करनाल से मेरे ग्रैंडफादर को लेकर गया हूँ मैं एक्सकर्जन पे. वो भी सोचोगे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं. एंड ही आई ऑब्वियसली डिडंट टेल हिम इट्स अबाउट द गर्ल. आई थिंक मुझे चाहिए मुझे ऋतिक रोशन पसंद है. ही इज लाइक हाँ चलो बेटा तुम्हें ऋतिक रोशन पसंद है, मैं रिटायर्ड हूँ तो क्या फर्क पड़ता है. So we went and went to the factory and we got the cards now, but he had only one set of those cards, right? So so I also wanted my own, पर वो मिले नहीं. मैंने कहा कोई बात नहीं. So I took these one set of cards and I went back and gave it to my girlfriend and said these are the cards for you, right? And she was like yeah, very sweet story so far, right? So it was very nice and she was very moved and she was very happy. And then she decided to break up with me because she was going outside. The same story that I told you. अच्छा, the long distance story. हाँ. तो क्यों उसको जा रही थी. So एक तो मुझे ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा था कि मेरा दिल टूट गया और दूसरा मुझे लगा था बट मैंने अपने कार्ड्स उसको दिए कि ये अब ठीक है मेरा दिल तो कुछ नहीं हो सकता बट कार्ड्स तो मेरे हैं ना. मैंने आई ऑल्सो लव ऋतिक रोशन, यू ऑल्सो लव ऋतिक रोशन. आई अंडरस्टैंड ऑल द अदर गिफ्ट्स आर गिवन यू. मैंने तुम्हें टेडी बेयर्स दिए हैं, मतलब छोटी सी फेक ज्वेलरी दी है, ऑल ऑफ दैट रखो. बट ऋतिक रोशन आई मीन दैट्स बिगर देन टीनेज लव, कम ऑन. तो मैं फिर रिमेंबर दैट. So the first time I went to meet her after she said this statement कि हम लोग I don't think we should be together, मैं उसके घर गया था and I mean her mother also came to know. Her mother was very cute. It was a very cute thing. Everybody knew. So तो मैं उसके घर गया था तो उसको मैंने पहले तो कन्विंस करने की कोशिश की. आई डोंट थिंक ब्रेकअप होना चाहिए, रोया वोया सब हुआ, वो भी रोई, सब ऑल ऑफ दैट थिंग कि नहीं यार करना पड़ेगा ये वो. एंड फिर जब ये नहीं हुआ मैंने कहा ठीक है चलो नहीं होता इट्स ओके. बट it was very tough because for the first 15, 20, 30 minutes, maybe more, I think 2 hours, I might have just been like you need to come back and we should continue dating. And she said no. And at the end of it she says no. I was like ठीक है अगर ये नहीं हो सकता फिर at least return my Hrithik Roshan cards. And she's like what? I was like हाँ तो you're not how does it matter now if you have chosen to break up with me you can return those cards. And then she's like but it was a gift. I was like but my heart was also a gift and you're not like वो तुमने रिटर्न कर दिया इतनी आसान से बट मेरे कार्ड तुमने रिटर्न नहीं कर रही. एंड शी वाज जस्ट लाइक मैं नहीं दूंगी. अरे ये क्या यार, मतलब कि हार्ट ब्रेक इसके लिए आसान है बट ऋतिक दिल वापस कर सकते हो तो कार्ड नहीं कर सकती. सो आई वाज वेरी लाइक अपसेट अबाउट दैट. आई वाज लाइक एंड देन किसी तरीके से हम लोगों ने मैं गया ही नहीं. मैं आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग विदाउट दोस कार्ड्स. यू टुक द कार्ड्स. आई नेगोशिएटेड देन. अच्छा चल ठीक है 3 दे दे बाकी रख ले कुछ तो मतलब ऐसा तो नहीं ना. आई कांट लूज एवरीवेयर. So then somehow she was very upset. I was very upset. Both of us were so more than the fact that we had broken up, we were upset. She was upset that I was asking for it back. I was upset she's not giving it. And then finally हमने आधे करके 6 कुछ कार्ड थे, 3 मुझे दिए और 3 मैंने कहा चलो कुछ तो मिला मुझे. So cards का about this is such a cute story. this is my this is so cute. Love it. Yeah. Do I even go to others because I will keep finding stories like this. I'm very embarrassing stories. You want to do full episode with heart stories? Because see अभी क्या है ना, this is just embarrassment episode क्योंकि मैं एक लड़की के साथ था हूँ, ये बाकी जगह ना ही हुई है, right? और मुझे कुछ why am I saying all of these? It's just
So, Yeah. so one again very embarrassing story. हाँ. Shit, this is such a stupid story, but okay. There was a senior of mine who I was Yeah. very close to in college. I would go to his room every day and I'd just be like, यार मुझे थोड़ा एडवाइस चाहिए. वो कूल बंदा है यार, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे थोड़ा एडवाइस चाहिए कि जना कैसे क्या करें, मतलब whatever. And he would every day give me like ऐसा कर, you know, or whatever it is. Or he might say something like, you know, I don't think that you would like something like this. I think you should do this instead. मैंने कहा okay, this is great, this is good. So चलता रहा, you know, after for some time चलता रहा, and after point of time ऐसा हो गया कि you know, I had to now, मतलब अब क्या करें, क्रश तो है, चल ही रहा है. now either you go forward or you can't just stay in that something, right? तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब might as well just ask her out, right? It wasn't even like I was in love with her, it was just like let's ask her out, you know, what else can we do? So I decided कि एक दिन करेंगे, okay, and I got a nice gift for her. Went to the girls hostel. हमारे college में NIT कुरुक्षेत्र के अंदर is a very big, you know, एक GH है which is like more guarded than you know prisons, and वहाँ पे हर जगह पे गार्ड लगे हैं, लड़के अलाउड नहीं है obviously. तो मैं वहाँ गेट पर गया, मैं तो कॉल किया, मैंने कहा come, I have something for you. So she came out, okay, and गेट तक रात के आधे 8-8 बजे थे, और you know it was evening time, and I had this gift, and she came to the gate. I was at the gate, and the gift in front of me, and I was like, you know, she looked at the gift, and before I could say something, she's like, I hope this is not for me. And I saw this, and I was like, I looked at her, and I was like, of course it's not for you. Why would it be for you? How would you think this is for you? She's like, then who is it for? I was like, I have a crush on some other girl, and I wanted your help in giving this gift to her. Why would I like give you a gift? We are just friends. She's like, yeah. I was like, we are just friends. I was like, exactly, we're just friends. I was so embarrassed. And then I went from there, and I called the friend that I told I have a crush on. I called her, and I was like, listen, I told this other girl that I have a crush on you. She's going to give you a gift. It was for her, but it's for you. Now you just pick it and, you know, just pretend like, you know, this is for you. And she's like, you are such an embarrassing person. I was like, yes, I am an embarrassing person. And और फिर मैं वापस गया, फिर उसने मुझे कॉल किया. She's like, listen, I'm sorry that I thought that this gift was for me. I was like, no, why would you think that? I am very offended. You think हमारी दोस्ती ऐसी है क्या? तुम तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? And she's like, yeah, I think it's my fault or whatever it is. So I'm glad we've cleared it up. I was like, yeah, and I hope we can continue to be friends after this. She's like, yes, I hope so too. I was like, great, this is done. And but I was like, yeah, this is the most embarrassing that has happened to me. But the story is not over yet. Oh. Because because I was then wondering, I was like, उसको कैसे पता चला कि मैं, मतलब I was like, was it that obvious? Was it just like, why would she think that I like her or that this gift is for her? मतलब कुछ तो होगा. And then 2-3 days I was just thinking, and the 4th day I got the answer when one of my friends said, hey, the window se dekhna niche. I was sitting in the classroom, I saw the window, and this girl is going with, you know, walking on a walk, hand in hand with a guy. I was like, ye kaun ladka hai? And then it turned out to be my senior. The guy who was giving me advice about what to do with her was also talking to her at the same time, and they started liking each other. So she knew, because every day I would go to him, he would tell her, oh, Nikhil मेरे पास आया, उसने मुझे ये बोला. So I was like, ये क्या धोखा मेरे साथ जो हुआ है. So first from like embarrassment, I was just like, this is a revenge story. How could he do this to me? How could he do this to me? So I was from embarrassment, I was angry, and I was just like, I was like, ये तो. So then, you know, my mature way of dealing with this was I stopped talking to him. So he would just message me. He's like, अच्छा, मतलब, because somebody told him that I found out, and then he's just like, अरे, I'm sorry, I didn't know how to tell you that, you know, we started talking to each other. I was like, fuck you, I don't want to talk to you, whatever it is. तो मैं बात करना बंद कर दिया as a mature person. And the story concludes with this, again, a really embarrassing, stupid thing, but it's such a filmy thing. तो उसका farewell हो रहा था मेरे senior का. It was the last day, and there were a small group of people, and जहाँ पर वो भी था, and everybody. So we were all part of a magazine, you know, college magazine or whatever. So there was like 20 people in that magazine. Everybody had come to know. This girl was also there. My senior was also there. That's how they also came to know. That's how I also came to know. So farewell हो रहा था. Everybody was, Nikhil, तू आ जा यार. तू ना मतलब ऐसा, don't. It's okay. It's a, you know, everybody knew what had happened. So they were like, don't make it a big deal.
just come, let's let bygones be bygones. So I came for the film. And the guy was very happy. He's like, I'm so happy to see you, that you've come. I'm glad. I'm sorry for everything that happened. We didn't want to hurt you. Nobody wanted to hurt you. I was like, yeah, fair enough. So then gifts की बारी. So gifts की बारी आई, सबने gifts दिए एक एक करके जना. Everyone had something personal to give. This is for you. This is for you. This is why you mean something to me. This is why. That was a thing that we used to do with all the seniors. I'll give you gifts. मेरी जब बारी आई. Oh God, such a filmy stupid thing. I gave him a knife. I said, oh my God, ये है मेरा gift. I said, अगले दोस्त के छाती में डालना. Everybody was like, I thought it was a funny thing. Okay, I delivered it also with comedy. I said, ये रहा knife. अगले दोस्त के सीने में खोपना. ठीक है ना? Not on the back. And I thought, I was like, ha. And nobody laughed. And everybody just looked at each other. And he looked at me. And the girls also there. They looked at the girl. The girl is looking at her. She's looking at me. I'm looking at him. And I'm just like, this clearly did not work. And it just became like this. Everybody was like, okay, let's just move on. And I think it's a joke, guys. It's a joke. And they're like, it's not a joke. It wasn't a joke. I mean, you meant every single Of course I meant it. But I thought people are going to laugh about it. But no one laughed. So, yeah, that is another... Yeah. These stories are just like it's like a plot line for I'm telling you. some really twisted rom-com. Yeah, this was the most. And I'll tell you the clincher, by the way. Yeah. And you will not believe this. The clincher of this story is that this girl also had light eyes. That is why I was like, this is the one. And it is only much later that I found out that she also used to wear contact lenses. So I am the most embarrassing boy to have walked on planet Earth. Did you And eventually marry a girl No. who had light eyes? After the second time, I was like, no, third time. I was like, abhi. Light eyes is a red flag now. Yeah. I was like, अब तो नहीं. अब तो कोई असली भी किसी की आंखें होंगी ना, मैं मानता ही नहीं. हो ही नहीं सकता. कॉन्टैक्ट ही है. मैं तो मान के चलता हूँ अभी. किसी ने है ही नहीं किसी के जिंदगी के अंदर किसी की ना आगे लाइट में सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं. So I have now stopped believing in this as a thing. I just हो ही नहीं सकता. So but yeah, once bitten twice shy, twice bitten thrice shy भी हो गया. But thank God Daisy said yes to me. Otherwise I would have had so many more stories. And Daisy always keeps telling me like, because I talk a lot about a lot of things with my podcast. She's like, why don't you talk about love? Why don't you talk about me? Yeah. So I'm like, if I have to talk about love, then I have to talk about a lot of things. Yeah. But today I spoke about you, Daisy. I spoke about you first. So you have to forgive all these stories that happen at the end of it. Yeah, this episode is dedicated to her. It is. And we have had a really great relationship. And it's been 17 years and it's actually awesome. We have had DDLJ a kind of romance in literally our honeymoon Paris and Switzerland mein tha. Oh, nice. So we went to all the locations where literally DDLJ, we did a road trip from Switzerland to Paris because obviously DDLJ mein road trip thi that these two, the Euro trip thi, so we kind of did the same thing. So so we've had like we've grown up together. We've just stayed friends through this, which I think like is when you marry the person you love, I think the thing that matters most in that is actually the friendship. So I'm really grateful that like मेरी जिंदगी में हमेशा मैं ये ना I've been very inspired by Dharma and Yash Raj, as you know. तो कुछ होता है, मैं जब करण जौहर ने बोला था ना, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, प्यार भी एक ही बार होता है, मैंने मान लिया था. ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई कि जब अगर मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं आई वुड हैव बीन लाइक यही है, एक बार एंड दूसरे ने नहीं छोड़ा. थैंकफुली डेजी, थैंक यू, उसने शी स्टेड विद मी, सो आई एम विद हर सिंस. एंड लॉट ऑफ पीपल पॉइंट आउट फैक्चुअल एरर सेइंग दैट अरे कुछ होता है कि अंदर भी I was just gonna say दो that. बार ही हुआ था. पर मेरे साथ भी 2 बार ही हुआ है ना, बाकी तो क्रशेस थे. एक बारी पहला और दूसरी बारी जो हमेशा that's stayed. So yeah, Daisy is my Anjali, she's my Simran, and I'm really grateful to have her. Aww, that came full circle. But no, tell me, since we've spoken so much about love, and of course your definition of love from what I hear from these stories is obviously like very filmy and very dosti hai, love is Bollywood. friendship. Yeah. Actually, for me, I think it's the opposite. It's dosti pyar hai. Nice. Anyway. Yeah. But so like now, like
since you've been with her for so long, Yeah. 17, 18 years, you said you've been 17 married. years. Has that definition changed along the way? Where does love mean something more, something else? Has that definition evolved over the years, or? यार आई थिंक मुझे कोपल हमेशा से पहला जो मेरा ऑब्वियसली नोशन था बहुत रोमांटिसाइज था ना हाँ. कि ना प्यार होता है कि जिस हर दिन एक परफॉर्मेंस है, हर दिन कुछ करना पड़ता है, यू नो लाइक फिल्में यही दिखाती है ना कि यार जब तक आप ना अपना दिल लिटरली यू नो हथेली में लेकर अब नहीं घूम रहे हो, इफ यू आर नॉट यू नो कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग उसको सरप्राइज करने के लिए, उसको खुशी दिलाने के लिए, यू नो देन यू आर नॉट इनफ. तो सारे जितने रोमांटिक हीरो होते हैं कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, ऑलवेज परफॉर्मिंग. तो मुझे भी यही लगता था कि मैं ना मतलब आई वाज द काइंड ऑफ गाय जब हमारी मतलब पहला वैलेंटाइंस डे था तो उस टाइम हमारे वी स्टार्टेड डेटिंग ऑन November 14 एंड actually also we married on February 14, so we are extremely like yeah. तो बट उसका एक ये भी है कि हमारी जो ना एनिवर्सरीज कम हो गई हैं, सो वी हैव एनीवे. तो उस टाइम को 4 महीने हुए थे तो मैंने 4 महीने के लिए उसको 4 यू नो अलग गिफ्ट दिए थे. और एंड you know I did this whole thing where I got 4 different people to go to her room one by one and give her gifts. And then she called me that day. She's like, if you ever do this again, I am never talking to you. I was like, ये तो बट रोमांटिक है. She's like, नहीं ये embarrassing है. I was like, but ये तो बॉलीवुड में नहीं बोला. Know the difference. Correct. मैंने कहा बट ये तो मैं जता रहा हूँ ना प्यार पब्लिकली. She's like, नहीं चाहिए पब्लिकली, प्राइवेटली दिखाओ प्लीज, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन आवर रिलेशनशिप. आई वाज लाइक वो ऐसा है क्या? So she's like हाँ. तो मैं थोड़ा you know over the years now staying with her, I have obviously learned that everything was show for me. You know कि romance has to be about show. And then of course you start realizing romance is and love is I think a lot more about you know being there for each other, right? And all these you know we've had so many different phases. And मेरा कोई लो फेज हुआ है, उसका लो फेज हुआ है, मेरी मेंटल हेल्थ को इश्यूज हुए हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को इश्यूज हुए हैं, मेरे करियर में कभी डिप आया, उसके करियर में डिप आया. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो जब हाइज में होते हैं तो उस टाइम यू नो दोस्ती हो. आई थिंक सबसे ज़्यादा तो दोस्ती और फ्रेंडशिप हैपेंस जब आप लूज में होते हो, जब आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. उस टाइम आई डोंट थिंक प्यार यू नो लाइक आई थिंक प्यार समटाइम्स ऑल्सो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपको कब किसी को आपकी ज़रूरत है और किसी को और तब और ये भी जब आप किसी को जब आपका पार्टनर चाहता है कि आप शायद उसके पास ना हो उस समय. यू नो इट्स बोथ. इट्स अबाउट बीइंग देयर and knowing when not to be there, you know, and when should I give the space to my partner to deal with something that they you know don't need me for, and when should I you know hold their hand and be like मैं हूँ आपके साथ. And I think वो चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं. That's a great note to end the heart conversation. Listen, you did one full episode with this object. This is amazing. Personal object for me. This is the most personal. यही तो है. और है क्या बात करने को? ये दिल ही तो होता है और होता क्या? But I'm not going to let go of you with this one object. I will make sure you tell me more stories with more objects. So I have a quick segment. Yes, of course. Okay, it's called Keep It Honest. Yeah. And like I've done otherwise so far. You've been very, I have been you too have been honest. very, very honest. You have to be like keep it less honest. अभी आपको change करना पड़ेगा. ये बहुत honesty होगी. But listen, इस segment में actually the thing is कि आप और खुल जाओगे because we'll be doing it while we're having ice cream. Yes. So whenever you're having ice cream, I think you just become a child. I love so that. this the ice cream, the beautiful ice cream is Nick ice cream, and what I want you to do now, Nick, is pick your Nick. Are you ready for the next segment? Absolutely. You know, मतलब ice cream मेरे लिए बनी. I think literally it's called Nick, and that's been the nickname that I've had for a very long time. So I'm excited. Yeah. Cool. Let's do it. Let's do it. It's a rapid fire. Yeah. With ice cream. So the idea is I'm just going to throw like random words at you. Words? Yeah, all objects. Okay. And the first story that comes to your mind, the first kissa, the first anecdote, you have to tell me that. I'm very bad at rapid fire. I just want to tell you, I'm terrible. If you want to pass a word, that's okay. तो मैं पास सारे नहीं अगर मैं पास करूँ फिर you will say. No. This is I only eat ice cream in this segment. That's my job. ये थोड़ा सही है. Any okay.
This segment is for me to eat ice cream. Partially passed back. चलो अब तुम बताओ. Okay, that's fair actually. हाँ. Okay. Okay. There's so many objects you didn't do. I can just ask some of these only. ये सारी बोरिंग स्टोरीज हैं और हाँ. तो मुझे इंटरेस्टिंग है ही नहीं फिर मेरे बारे में. Okay. I'm trying to think of something interesting. Sure. Khat. Khat. Yeah, I have. I am the person who. I don't know how many. Have I received a really lovely letter? I'm usually the person who's writing letters. मुझे ना letters लिखना ना बहुत मुझे बहुत प्यारा लगता है. तो मैं and actually I did receive a letter. Oh fuck, what am I saying? यार ये पूरा एपिसोड ना लोगों को लगेगा मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं और चीज़ बात करने को. बट अभी आप क्वेश्चन आप चीज़ें भी ऐसे पूछ रहे हो कि सो द फर्स्ट लेटर आई रिमेंबर रिसीविंग वेरी क्लियरली. So the girl that I first, my friend, the girl that I first went out with, and my first girlfriend, there was another guy in our group who used to like her. And all of us knew कि उसको वो पसंद है, उसको भी पता उसको पसंद है, मुझे पता उसको पसंद है, सबको पसंद है, तो इसलिए उससे जो ना और कोई मतलब ज़्यादा बात भी नहीं करता था. एंड समर वेकेशंस की बात है और समर वेकेशंस के टाइम पर मेरे सारी दोस्तियाँ टूट जाएंगी लगा इसके बाद इस एपिसोड के बाद. बट समर वेकेशन के टाइम पर सब चले गए थे इंडिया और मैं और मेरी फ्रेंड हम 2 या 3 ही थे उस ग्रुप के. हमारा 7 लोगों का ग्रुप था. वही लोग थे कि जो बारे में रह गए, बाकी सब चले गए. तो रह गए तो हमने बातें करनी शुरू कर दिया कि चलो ठीक है. वैसे हम लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे. हम लोग वी यूज्ड टू जस्ट गो आउट, हैंग आउट. होता ना हर ग्रुप के डायनामिक होते हैं. तो आई वाज नॉट एक्चुअली पर्टिकुलरली क्लोज टू दिस गर्ल, बट क्योंकि और कोई था नहीं तो हमने बातें शुरू कर दी. एट सम पॉइंट हम लोग दूसरे प्यार लाइक करने लग गए, प्यार हो गया. एंड व्हाटएवर दैट टीनेज लव वाज, and then we started dating. And then after we started dating, we were just like छुट्टियाँ खत्म होने आई हैं. And that friend of ours who's in love with her, अरे उसको भी तो बताना है. उसको पता लगेगा तो how will we deal with that? And वो तो सोचा नहीं था हमने. हम लोग obviously अपने में लगे रहे थे. And जब ये बारी आई, and it was a very dramatic thing, such a dramatic thing. एक slow dance मेरे बर्थडे का दिन था. पेपर डांस होता है ना, पेपर डांस कर रहे थे. तो सबने बोला था कि यार यहाँ पर ना उसको ना ढंग से बताना पड़ेगा. ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम इंडिया. ऑल ऑफ अस हैड जस्ट कम बैक टुगेदर. स्कूल वापस शुरू होने वाला था. पेपर डांस के टाइम पे सबने कपल बनाने थे. मुझे बोला गया था कि यार डोंट, मेरे फ्रेंड्स ने और ना जो जिनको पता था उस टाइम पर 3-4 लोग कहता कि उसको ना ऐसा हार्ट अटैक नहीं देते. यू डोंट डांस विद हर, यू डांस विद समवन एल्स. एंड मैंने कहा ठीक है कोई चक्कर नहीं है. एंड देन आई पिक्ड अप पीपल, कपल्स रह गए. फिर 4 लोग रह गए, मैं, मेरी गर्लफ्रेंड, वो लड़का और एक अदर कॉमन फ्रेंड. एंड मैं आई वाज लाइक हाँ करने ही वाला था कि हाँ वो और वो. बट फिर मुझे लगा यार क्यों यार, गर्लफ्रेंड तो मेरी है, मैं क्यों किसी को ऐसे पकड़ने दूँ उसको. व्हाई शुड आई लेट एनीबडी एल्स होल्ड हर. सो आई जस्ट सेड लास्ट मिनट में मैनेजर ने टर्न ऑन करके बोला कि मी एंड हर एंड दिस गाय एंड ही वाज शॉक्ड. ही वाज crestfallen. Why would he do this move? And everybody, it was like this, most everybody knew that he liked her. Not everybody knew that we were dating. It was a whole thing where everybody was like, ये क्या हुआ? You know, and then of course हमने किया was paper dance, slow dance, छोटे करके होते गए. And this guy just kept looking at me and I was just like, I don't care, मेरी girlfriend है, मैं क्यों करूँ? And then people kept getting angry. And then of course somebody told him and he found out. And then he wrote a letter, which is a really long letter saying, I will never forgive you. You know, you are तूने मेरे को धोखा दिया है. You know, friendships को धोखा दिया है. मैं तुमको I used to really admire you, really respect you. कुछ नहीं रह गया, etc. Fuck you. I'm gonna still keep trying for her. Let's see who wins and all of this लिखा था उसने लेटर के अंदर. मैं लेटर पढ़ा. बट मैथ की ट्यूशन के अंदर ना मैं ज़्यादा मैथ की ट्यूशन में पास ऑन हुआ तो वहाँ बैठा था. मैं यहाँ बैठा उसने लेटर दिया. मैं पढ़ा हट मैं तू क्या हट मेरे से कम्पीट करेगा, रहने दे. You know, so मेरा प्यार सच्चा, तुम क्या. It's all teenage stupid things. And yeah, I remember that is the first letter I received. And I didn't give a fuck about it. And this is a true story. After like 3-4 months where he was like नहीं मैं कोशिश करूँगा. 4th month तक he was like यार ये लोग तो actually like करते हैं दूसरे को. He then found somebody else and then राखी के then he's like नहीं तू मेरी बहन है क्योंकि तू उसके साथ है. So he got a Rakhi tag from her. Because like ये मेरा भाई है. It's okay. I'm done with it. So
and funnily and interestingly, Yeah. the girl I paid him up with is now the girl he's married. So actually he has to thank me also. This is not only did I मेरा तो relationship नहीं चला, उसका relationship चल गया. So कहीं ना कहीं it's actually because of me only. He should thank me. I don't know why he hasn't yet. Another Yeah. letter coming your Yeah, way. I did a thank you letter. I have forgiven you and I love you. Yeah. Okay. Okay, I'll give you one last object. Okay. Trophy. Trophy. Yeah, I fortunately used to get a lot of trophies. So school के अंदर there used to be this Indian school Bahrain, most unique name. जो गल्फ के अंदर सारे मिडिल ईस्ट के अंदर यही होता था कि इंडियन बच्चों का स्कूल है तो क्या व्हाट शुड वी कॉल इट इंडियन स्कूल. फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस. सो या जेनेरिक इंडियन स्कूल Bahrain. There used to be something called the group champion, जो हमेशा जो ना ये थोड़ा प्राउड वाला भी है मोमेंट फॉर मी, बिकॉज ग्रुप चैंपियन होता था जो अपने आपके हाउस से होते हैं ना, ब्लू हाउस, वी यूज्ड टू हैव blue was peacock, I was in peacock, and red was something else, eagle was something else, ऐसा कुछ करके. और 9th और 10th के अंदर ना वही चैंपियनशिप होती थी और सीनियर्स के लिए. और टिपिकली ग्रुप चैंपियन वो होते थे जो एथलेटिक्स में वी यूज्ड टू बिकॉज यू ओनली हैव, आप 5 या 6 चीज़ों में जीतो ना तब जाके आपको ग्रुप चैंपियनशिप मिलती है. एंड इट वाज टिपिकली athletics and athletes who used to win that. And but in 9th or 10th standard की I think बात है, which was obviously the year जब board करना था, but I took part in so many different competitions and won so many different things that I ended up being the group champion for the first time, and everybody was shocked that it was a non-athlete who had won. And it was me, and I was shocked. I couldn't believe it. And then they called, I was like, मैं कैसे? But I just won like so many. I had won third in something. मतलब कहीं मैं गाना भी गा रहा हूँ choir के अंदर, कहीं मैं debate में कुछ जीत रहा हूँ, कहीं मैं essay writing में कुछ जीत रहा हूँ. So it was a very big moment for me. And you know, this is another episode, so I don't want to get into this too much. But I used to get bullied a lot, you know, and not because of, not because of. I used to get bullied because I was looked upon as this person who people used to think thinks too much of himself, because I used to win things. So I used to get, it's the opposite. People get, bullied because they're weak at things. I used to get bullied because I'm good at things. So I used to have a lot of people constantly judging me, I've had some very dark days in school. People throwing cricket खेल रहा हूँ, पत्थर फेंकना मेरे पे, all sorts of assembly के अंदर मुझे याद है मेरा नाम बुलाया जाता था. Smaller trophies that used to win. So it is about trophies. I used to win something, my name used to come up, and I used to remember I was at the back of the assembly and मैं पीछे से आगे चल के जा रहा हूँ और सारे लड़के ना boo कर रहे हैं, and I am just like, those are memories that I just can't get out of my head. And I'm just like, ऐसा मैंने क्या कर दिया? Why is everyone booing me? And then of course I'd look at the girl side and I was like, लड़कियाँ boo नहीं करती फिर ठीक है, भाड़ में के लड़के, who cares about boys? But then when I won the group champion, I think for me it was such a big vindication कि जो ना यार तुम ठीक है, तुमने जो भी किया. And I think उसके बाद मेरे को थोड़ी इज्जत भी मिली कॉलेज स्कूल के अंदर, because where it was like no matter, like somehow even after all what people used to say about me or get angry at me, etc., I still managed to hold my own. I didn't have as many friends. I had 4 or 5 friends, who really used to like me, and I used to really care about the work that I did, the things that I took participated in, and kahin na kahin, like an underdog, I ended up winning the group champion. I also didn't expect it. So I have this big, massive trophy at my home. It's a very big trophy. You give, like, they used to make a big deal out of it, and nobody could believe I won it. I couldn't believe I won it. And I think that was the day that I was like, चलो ठीक है, तुमने क्या ना बोली, अब देखो जीत गया ना, अब चुप हो जाओ, बदतमीज. So yeah, it was a nice moment for me actually winning that. Oh. Yeah. That's such a nice story. Yeah, I mean मेरा quiet revenge, मेरा revenge का फंडा यही है. The best revenge is success. It is, वो मेरा फंडा है कि तुम कोई रिस्पॉन्ड नहीं, जरूरत नहीं है, जिंदगी में अच्छा करोगे ना, अपने आप ही सब लोग आके बाद में जाके बोलेंगे यार नहीं तू ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. Instead of hitting back or shouting back और clapping back, मैं वो सब नहीं करता रहना. ठीक है, तुम अपनी लाइन में, मैं अपनी लाइन में काम करता रहूँगा. एक न एक दिन तुम खुद आके बोलोगे यार अच्छा इंसान है, and not because अच्छा काम करता है. Genuinely also feel like यार what is the point of, like if somebody is bullying you, I also feel like there's some hurt in them that's coming out. It's never a function of, it's always either insecurity, it's always either hurt, it's always something to do with them. It's never about you. It's never about you. Nobody attacks you because they
it's about you, it's always about them, you know, and I've always believed that. So in my life, I've always tried to just make sure that I focus on me. I try to just do good work, be a good person, and hopefully all the people who do not like you at some point will recognize that यार हम कुछ कहता भी नहीं है, हम कितना बोलते हैं, इसके अपने आप ही आके बोलते हैं sorry. And this has happened with me. And this is the last thing I'll say because I know that, you know, we've taken a lot of time, but it's actually happened with me. Literally has happened with me where a boy who used to bully me, and I didn't know. So, you know, I used to write in a newspaper over there. I used to write very early. I started writing very early. When I was about 14 or 15, I started writing in newspapers and magazines in the Middle East. I used to have hate letters written for me. You know, people used to write letters as in anger, saying that Nikhil, you know, he's an idiot. Literally, that was the point. And you know, this is not emails. People were not emailing. People were at that time physically writing letters, putting them in envelopes, going to the post office, posting the letter. Some editor in the newspaper is opening that letter. उस letter में लिखा निकल गया है, you know, and वो छापते हैं. हाँ ठीक है, you know, वो 14 साल का था उस टाइम पर मैं लिखता था. People used to write against me, and so I used to constantly face this. So trolling अब तो anonymous होती है, ये होती है, लोग ऐसे effort मार के करते थे. ऐसा नहीं एक second के अंदर trolling हो गई. So I respect that. I respect that. So I used to get you know, all kinds of bullying used to happen. After I you know, in fact group champion and all happened. Many years later, 11th standard के अंदर in a bus once, this guy, one of my some friend that I had in the bus friend, होते हैं ना bus friend है, तो bus friend के साथ बैठा हुआ था, उसने मुझे पूछा कि how are you doing, and अभी होता है कि जब मेरे से कोई पूछता है ना how are you, मैं बता देता हूँ. मैं ना फिर रुकता नहीं, मैं how am I doing, चल बैठ के बताता हूँ. तो पूरी जिंदगी कोई कहानी वानी बता दी मैंने. He heard the whole thing and he's like, यार I just wanted to say sorry to you. I'm like, क्यों, मैंने ऐसा like मैंने कैसा बोल दिया कि तुम sorry बोल रहे हो. And he's like कि you know those letters that people used to write against you, I was one of them. And I was like, okay. And I was very confused because I was like, एक तो मुझे लगता था ना कि ना मैं साइंस में था, तो मुझे लगता था जितने मुझे हेट करते ना वो कॉमर्स के बच्चे. क्यों? क्योंकि वो होता है. ठीक है, मुझे लगता है साइंस वाले बच्चों का टाइम कहाँ होता है यार. दे हेट देमसेल्फ सो मच, दे डोंट हैव द टाइम टू हेट एनीबॉडी एल्स. सो आई वाज लाइक, यार पर तुम तो साइंस से हो, तुम क्यों मुझे, हाउ कुड यू डू दिस धोखा. And then he just said, you know, he's like, I used to think that, you know, I used to read your letters and I used to think, यार अपने आप समझदा क्या है, letters जो लिखता है, getting published at 14, 15, सारे trophies पे जीत रहा है. I used to think that you're a narcissist. I used to think you're full of yourself. I used to think that you're an asshole. But now that I've gotten to know you, I realize that you're not a bad guy. You're a good guy. And I'm hearing this whole thing and I'm just like, bro, you know, I wanted to punch him because, I mean, lots has happened. After I got bullied, I left Bahrain. I came to India actually. I was like, I can't stay in that school anymore. My brother used to get bullied because of me. So not only was I getting bullied, people were literally hitting him, saying that you're Nikhil's brother, thappad. So, and I was just like, kya chal raha hai yaar? This is, so I left the school. Then I came back after 6 months. I homeschooled for 6 months. I was trying to get, I mean, there's a whole story there. I got into Mayo College Ajmer, didn't end up staying there. Came back to Bahrain, and at the end of it, and then this guy just tells me, and I'm like, I've lost 1 year of my life to all of this, and you're just saying that so casually कि जो ना मैंने, I'm sorry, but मेरे दिमाग में ये था कि यार इसने बोला है, there must be some reason for it, and I think that's when, and it's a great note for us to end on because that's where I understood the power of stories, because I told him some story of my life, I told him something about myself that made him feel empathy towards me, and instead of saying like hitting him in return, I actually for the first time recognize that if you listen to someone's story, you don't hate them anymore, right? If you get to know somebody, you have empathy for them. अब कहानी इसलिए तो बोलते हो, कहानी इसलिए तो सुनते हो कि जो ना आपको you connect with each other, it makes you more human. And the fact कि मैंने उसको ऐसा कुछ बोला, जो सुनकर उसने मुझे बोला कि यार I want to apologize, was a very big moment for me. And I said thank you to him. I said thank you कि तुमने मुझे बताया ऐसा. Because today for the first time I realized that you know, this is maybe what I need to do. You know, maybe I need to, people judge you for the label you are. People see the, you know, बाहर से उनको कुछ दिखता है, वो ओपिनियन होता है, एक लेबल होता है, एक जजमेंट होती है कि तुम ये इस टाइप का इंसान है. I think more people should know the story behind the person. And for me, I think a lot of my ideas of wanting to become a storyteller also happened in those moments कि यार अपनी कहानी बतानी पड़ेगी लोगों को. जब तक बताओगे नहीं तो कोई जज ही करते रहेंगे दुनिया के अंदर. एंड कहीं ना कहीं वहाँ से फ्रॉम वांटिंग टू टेल स्टोरीज आई ऑल्सो बिकेम, आई फेल्ट इट सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू स्टोरीज. जब आप सुनते हो, यू विल नॉट जज, आप बताते हो,
then they will not judge, and exchange करते हो कहानियाँ, फिर empathy आती है और वहाँ से इंसानियत आती है, you know, and I think that इंसानियत is what I learned through this experience. So yeah, trophies का बहुत ही एक there's a story, but I think it's a good note for us to end on. That's a beautiful note to end Yeah. on. Stories. This is going to be it'll be a big twist because पहले मैं all of these embarrassing things I'm saying, and in the end I'm just like हाँ तो मुझे bully भी हुआ था और ये मेरी कहानी रही है. We need to do another episode where we explore more objects because obviously there is. What did I tell That's you? the guy I was just. What did I tell you? What did I tell you? I told you I have not had food in my life without dropping it. He walked in and he was like, "यार मैं खाना नहीं खा पाता हूँ बिना गिराए." And I was like, "He's eating his ice cream and ये है just." ये है. मैंने पूछा भी है लोगों से कि ये क्या हो सकता है. लोगों ने कहा कि तुम दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि तुम ना माइंडफुल ही नहीं हो पाते हो. And I agree. But on now it's a full circle. On that note, thank you so much, Nikhil. This was Thank you for having me, Kopal. beautiful. You think it's embarrassing, but I think it was really honest. Yeah, And too it was a honest. beautiful, cute, amazing, and like towards the end of it, very, very real episode. So thank you so much for sharing these. नहीं, thank you for doing this, and I think again मुझे तो लगता है कि कहानियाँ सबसे important होती है दुनिया के अंदर, and I got to see Sumukhi today, and Yeah. I also have been watching your show. I really appreciate आप जो करने की कोशिश करो उसके साथ. Thank you so much, and thank you for this ice cream. Thank you, मुझे, Nick, हाँ, for this ice अब cream. And मतलब कि पहले जब मैं गिराता हूँ तो मुझे इसलिए बुरा लगता है कि जो है ना मैं अपनी कपड़े में गिरा रहा हूँ. इस बार ही गिराया मैंने, कहा आइसक्रीम कम हो गई. तो ये this is what's going on in my head right now. But yeah, thank you for having me. I'm so grateful. thank you so much, Nikhil, and all the best for Be a Man Yaar. Thank you. I've been following, and I can't wait for Yeah. the more episodes that are to come and the seasons that are to Yeah, come. I I'm really sure hope there'll be that. many, many, many more. I'm very excited. There's a Naseer sir episode that's coming, and Yeah, and it's such Yeah. a badass episode Yeah. because वो I can उन्होंने imagine. Huh? उन्होंने तो बस डांट दिया लड़कों को. तुम क्या सोचते हो? क्यों नहीं करते औरतों की इज्जत? Like Yeah. sir, आप correct. It's Super. super. Anyway, Awesome. thank you for having me. Thank you so much for being here. Thank you for coming, and we have a little something for you. Oh wow, amazing. We shall. This was also a little something, but I'm happy to. There have is more of somethings. this. Great. That will be sent to you. Great. So there's more ice cream for you and Daisy because I think we heard a lot of Daisy. Yeah. Daisy's अब इसके बाद ना डेजी बोलेगी कि तुम मेरे मेरे को भी बारे में मिल मत. जाती है बार-बार ये वाह. पता नहीं क्यों. Love it. But we'll send some ice cream your way. Amazing. So thank you so much, and we have one more thing for you. Can you please help Nick me? holding Nick ice cream. Nick is a holding great- that box. Love it. Yeah. There's more gifts. Thank you so much. Emotions, Thank I you. love it. Yeah. Sure. Thank you so Thank much. you There's so too much. many things in your hands. Yeah, अभी. Do you want me to hold And it? then you like कि क्यों कैसे गिरती है कैसे ऐसे गिरा? गिरती Give है me चीजें. इसलिए चीजें गिरती हैं, खाना इसलिए गिरता है, बहुत ज्यादा होता है. Yeah. Okay. This is lovely. Thank you. Thank so you. much for Thank having you me. so Yeah. much. Thank you so much for coming. I had a wonderful day. Yeah, of course. Also hug you while you're holding so Thank you. many things. Thank you. Thank you. All right. Okay.